अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराब रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग अब चंद दिनों की दूरी पर है। 9 जून से इस लीग का आगाज़ होगा। तमाम टीमों की तैयारियां अबू धाबी स्टेडियम में जारी है, लेकिन बहुत सारी नज़रें, क्योंकि कराची किंग्स चैम्पियन है इस PSL का, अपने टाइटल का दिफा कर रहे हैं, फिर नंबर 1 पर हैं और कराची की ऑब्वियसली सबसे बड़ी पॉपुलेशन पाकिस्तान में, सबसे बड़ा फ़ैन क्लब भी इन्हीं का है। तो बहुत सारी बातें जो है वो कराची किंग्स के हवाले से हो रही हैं। तो कराची किंग्स के लिए आज हम स्पेशल एपिसोड कर रहे हैं और उनके जो हेड कोच हैं हर्षल गिब्स हमें ज्वाइन करें। 90 टेस्ट मैचेस, 248 ODIs, और अगर आप सबको याद हो वो मशहूर ज़माना ODI जब साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 435 का वर्ल्ड रिकॉर्ड उस ज़माने में चेस किया था, उसके मरकज़ी किरदार। सो हर्षल गिब्स is with us. Thank you so much, Herschelle, for your time. And obviously, it is a bit unfortunate. I'm not saying that welcome to Pakistan because PSL is not happening in Pakistan, but Pakistan fans eagerly waiting to see the action game, the PSL 6. And what's your thought on the PSL? And now you are the head coach of Karachi Kings, which they are going to defend the title. Yeah, good afternoon. I think it's a little bit unfortunate that we couldn't go back to Karachi. It would have been nice. It was a long time since I was in Karachi. After I played, so it was nice to be back in Karachi. But also, it was just a pity that they obviously had to postpone the tournament. And at least the tournament is being continued here in Abu Dhabi. And at least the fans back home in Pakistan will be able to watch it on TV. So. It would have been first prize. It would have been great to be back in Karachi, but at least all the Pakistan supporters and fans are going to be able to watch some cricket. So they'll be able to support their franchises, all their teams in the comfort of their homes. So it's not quite the same as going to the ground, but it's just nice for the league to be able to be continued, and hopefully. The Karachi Kings can defend the title. Okay. So you told me before we began the recording that 3 more days to go to your quarantine. So how your quarantine is going? And I know that an interview like this will help for the cause. Yeah. Look, I mean, I don't. You just have to adapt. It's as they say, it's the norm. There's some places where you have to quarantine a little bit longer than other places, but. If you have to quarantine, you have to quarantine. As long as we're doing the safety, we're taking the necessary safety protocols and following everything. That has to be done, unfortunately. And we all want to do our bit, to stay safe and to obey the rules and regulations with regards to quarantine and before we join up. With the squad in the other hotels, so it's just one of those things. I originally thought it was only going to be a week, but we've had to do another 3 days, so 10 days. So it's okay. I mean, this is one of those things. It gets a bit boring, but otherwise you have to do it. Yeah, absolutely. Not easy for especially sportsmen to spend 7 days or even 10 days in a single room. Let's back to cricket, Herschelle, because you have a marvelous team. Obviously, already team won the title in the PSL 5. Now PSL 6, they are already on the top. So you did a great job with them as a head coach in the PSL 6 as well. So when this league is starting again, how you see this? Obviously, the advantage of being on the top, it will remain, or do you think the tournament, because it's restarting after the gap of a few months, it will be a difficult thing to manage? Yeah, I think obviously the extreme temperatures that that we have here at the moment in Abu Dhabi, I think it's going to take its toll. I think it's going to play a big part in how the teams manage the extreme heat. Especially after spending 7 days in a AC room. Correct. So I obviously haven't been with the team. I'm in a separate hotel. All the guys that came from South Africa last week, we in a different hotel. So we haven't joined up with our squads just yet. So the guys have done now 2 practices or training sessions. I've still got 3 days left here in the quarantine.
So I've been liaising with obviously with the assistant coach Masru and obviously Wasim Akram, just to how go about things. But yeah, being on the top of the table at the moment is obviously having some sort of advantage. You know, obviously all the teams had to make adjustments with regards to player availability, and I lost 4 of my top 6. You know, they did so well in the first 6 games back in Karachi. So we've had a couple of obviously new replacements. And yeah, I mean, you know, the guys have got to get used to playing with one another. And yeah, I think the heat is definitely going to play a big part in who comes out tops here. I think, you know, come the playoffs, I think it's not only about making the right decisions on the field and executing your skills better than the opposition, but the weather conditions, the heat is definitely going to play a part here, especially because there's so much dew in the evening. So, you know, the ball's going to be a lot, you know, slippery. I think the batsmen are going to be sweating profusely. You know, there's obviously they're going to go through a lot of gloves, pairs of gloves, etc., etc. So it's not going to be easy, but you know, it's all part of professional sport, and you know, the guys will have to adapt very quickly. So yeah, I'm obviously very excited to get things going again. But I think everybody is, and obviously with all the replacements in the various teams, everybody is really looking forward to making the playoffs. Okay, we are as excited as you are, but in Karachi, Lahore, Islamabad, people are eagerly waiting for the beginning of the PSL again. एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हर्षल गिब्स से कुछ बात करेंगे बाबर आजम, वसीम अकरम और कराची किंग्स की। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। पुराम रिप्ले में खुशामदीद, हर्षल गिब्स हमारे साथ मौजूद है। हर्षल, so many questions from the Karachi Kings fan. Obviously, first of them was Babar Azam is Pakistan captain in all 3 formats, but you obviously had chosen to make Imad Wasim as the captain. Obviously, he did a great job. He won a title for Karachi Kings. But people are asking that Babar is not captaining, he's in the Karachi Kings side. Your views on that? I mean, I obviously wasn't part of the squad, you know, with the screen last year, obviously. But, you know, I think with regards to Babar Azam, I think it's nice for him to actually have a break from the captain duties. You know, I think it's a very tiring and a tedious responsibility to have, you know, and I think obviously with the pressures of international cricket, of being a captain in international cricket, I think it's quite nice for Imad, you know, to be captain of the Karachi Kings. It's nice to give Babar a nice break of, you know, making decisions and just concentrating on his batting. And I think, you know, how he played in those first couple of games was fantastic. So, you know, Imad's done a fantastic job. And like I said, it's got nothing to do with who's the better captain or, you know, et cetera, et cetera. It's just nice for Baba to be relieved of, you know, the duties of being a national captain, because there's a lot of pressure that comes with that. There's also a lot of responsibility. And it's just nice for a batsman, especially a batsman, to free the mind and just to go and play. You know, he's got enough work with regards to being national captain for Pakistan. So I think it's nice for Baba to have a break, and for Imad to be captain. Obviously, Babar already made his mark. He amongst the fabulous 4. A lot of people talk about the fabulous 5. How you see Herschelle yourself as one of the great ODI players ever produced? How you rate Babar Azam of now and obviously for the future, where he can go further? Yeah, look, I mean, for me, he's already in the top 3 in all formats of the game in the world. You know, so he's a fantastic player. You know, he knows his game. He's very determined and he's very hungry to score runs, irrespective of what format it is. You know, it's always a sign that they want to become better, they want to become greater. And you know, I think obviously if you look at Kohli, you know, Babar Azam is a lot younger than him. I
there's nothing stopping Babar Azam of achieving exactly what Virat Kohli has achieved. I think in the next decade, or 12 years or so, whatever it might be. But he's definitely got the potential to become one of the all-time best players of the game. So he's made a fantastic start, to his career. It's just, like I said, he's hungry. He's got the technique for all types of surfaces, and it's just up to him. I mean, he can become as good as Virat Kohli, if not better. All right. There are so many leagues happening in the world. Obviously, IPL, PSL, Big Bash, NatWest, and now the 100 coming. So, how you rate Gibbs? How you rate PSL among these leagues, especially a lot of talk about the PSL bowling standards? Yeah, look, they all talk about, they are very young and up and coming fast bowlers. And Pakistan, as I've obviously played against numerous times over the years, they've always produced young, quality fast bowlers. And the PSL has become known for that. Everybody that talks about it talks about the quality of the fast bowling. And I think also it's largely due with regards to the wickets, how good the wickets have been. It's important. It's not important, but it's nice when you have good wickets and you have good pace. That helps these young bowlers that are coming through the ranks, especially in the PSL, to bowl with confidence and self-belief. If the wickets were a little bit slower, they might not be as effective. But the wickets in Karachi were fantastic. Just the standard all around. I mean, look at the batting. There were scores of 180, 190 with regularity, in the first half of the tournament. And I think, the wickets here in Abu Dhabi are going to be no different. So I would definitely think, for me, having played in, the Big Bash and the IPL, South Africa, I didn't play in our local or domestic one. But for me, I think it's definitely in the top three. It's just PSL is definitely a fantastic tournament. There's a lot of skill. There's a lot of skill on display. Obviously slow bowling, quick bowling, power hitting. You've got everything on display, which is a complete tournament. So Right. I would think it's almost on par with with the Indian Premier League. All right. You played a lot of cricket in Pakistan, obviously against Wasim Akram. Now, Wasim Bhai, we called obviously him. He is with you in Karachi Kings. So, obviously they won the title when you didn't join, but then you worked together for the PSL 6. So, how you rate Wasim Akram as a mentor, as someone who is have a lot of influence on Pakistan cricket? So, how you experience working with Wasim Akram? Yeah, he's been fantastic. I mean, obviously I played against him, many a time, and you never really get to know the person, behind the bowler as such, behind the player. But now that I've obviously been with him, for since my time starting here, I've got to know him obviously on a more personal basis. And yeah, I mean, his desire is as strong as it was when he was a player. His desire to win. His professionalism is still very much there, and he demands a lot of a high standard from the players. He's a true professional with regard, how he interacts with the players, on and off the field, and he's a fantastic mentor in every sense with regards to how the youngsters see him. I mean, we all know he's one of the best to ever play the game, but yeah, I mean, he shows that in every aspect of how you come across, off the field. And the guys are complete in awe, listening to him speak. And he was always one, to show by example, or lead by example. So it's been great, obviously time with him. It's nice not having to face him, not having to face him in the match anymore. But we've had some great times already, Yes. and I'm hoping that our partnership continue for a long time to come. All right.
Arshay, you and obviously in that time your team had never allowed Pakistan to win in your home soil, but finally we were able to beat South Africa in South Africa. So you are now also working with Karachi King. You have very much knowledge about the Pakistan coming players. World T20 happening this year Yeah, again. So what's your opinion about the Pakistan progress? Obviously beating South Africa in South Africa for any team is not a joke. yeah. Look, I think it was a huge feat. I think yeah, it just shows you how times have changed. I think it's about adapting to the conditions. And I think Pakistan did exactly that. And obviously, the skipper Babar Azam led the way. In the T20s and ODIs. So with regards to in South Africa, so. They adapted. They played the conditions better. They were just they did the basics better than South Africa did, and they earned their series win. Big time. Both series wins actually. So I think they're well justified, and it's obviously a sign of the depth that Pakistan have as far as their talent is concerned. And I think it does their wonder for the self belief and their overall complete game. Just going forward, I think you take a lot of self-belief from that winning experience as a player and as a coaching staff and as a squad overall. All right. I posted a post on obviously on the social media. People asking one question very regularly that because you have Martin Guptill now, Sharjeel Babar obviously were opening for Karachi Kings. So they are asking. I'm not saying that you give me the breaking news. Who's going to open? But what's your opinion now? Guptill, Sharjeel, and Babar. You have three great openers. So that may make your job difficult to choose two of them? No, I think the nice thing about the top three. Well, Shergill, Babar, and Martin Guptill, I think they're all very experienced players. They know their role, and they've done really well, as a batter on all surfaces. So, as much as the Karachi King supporters would like to know who's going to be opening, I can't really tell them that. But I think if anyone those three opened, I think they're all going to be in for a treat because they are exceptional players and. If they fire, then the fans are going to be in for some real entertainment. But at this stage, I can't tell them who's going to be opening. Obviously, I was expecting this answer. But Arshad, last two quick questions, please, in a T20 style. Obviously, your four team you think can be semi-finalists maybe for the World T20. I know it's not decided yet that it will happen in India or maybe UAE. But your opinion, which four team can be favorites for the semi-finals? For the semi-finals, I think. I think England. I think West Indies. I think Pakistan. I think. I think Pakistan definitely. And I think New Zealand also are very much favourites. I think those four have got a lot of depth. They've got a lot of all-round ability. They've got a lot of skill. So we all know that T20 is very much a bit more unpredictable than the 50-over format. And Herschelle, India chances for the World T20? Look, I said a lot depends. If you get to the playoffs, anything can happen on the day. So that's why I said India, New Zealand, England, and the West Indies. I think those. Pakistan, India, West Indies. In England, not so much New Zealand because, I think they lack a little bit there in the spin department, and we know that spin plays such a big role. They've got to. Okay. I think the other teams are a bit more depth. Okay, and your quick analysis on a World Test Championship final. Who going to be favorite? David Miller says because it's happening in England, so New Zealand may be favorite at this stage. Your views? Yeah, you can say that, but in England, the weather, the overhead conditions play a much better part, a bigger part than the actual surface. Both bowling attacks are fantastic. They've got left armers. Both teams have got left arm quicks. So the overhead conditions, if it's hot, it's not always hot in the UK, but if it's hot and dry.
then it's very much even Stevens. You know, that's why I say you can't predict, because the weather in the UK is probably the most unpredictable thing, you know, to predict. It's the most unpredictable thing. But from a All right. batting point of view, if it's overcast for a couple of days, then you know it's going to be unpredictable, definitely. All right. Harshal, thank you so much for your time and good luck to your team for the PSL. हर्षल गिब्स हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी उनसे बातें हुई। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हर्षल इकबाल हमें ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद और हर्षल गिब्स हमारे साथ मौजूद थे ब्रेक से पहले और हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची किंग्स के उभरते हुए फास्ट बॉलर अरशद इकबाल, जो माशाल्लाह पाकिस्तान टीम में भी पहुंच चुके हैं। उनका डेब्यू हुआ अगेंस्ट जिम्बाब्वे, नाउ ही इज गोइंग टू इंग्लैंड एज वेल। अरशद, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आजम खान की स्टोरी तो बहुत मज़ेदार थी, उन्होंने कल बताई कि कब उनको पता चला, और इसी तरह मोहम्मद वसीम ने जब उनसे बात कर रहे थे, आपको जब पता चला था पहली मरतबा आपका इंक्लूजन हुआ, आपके क्या तासुरात थे? जी बिल्कुल, बहुत खुशी हो रही थी। मैं भी जा रहा था, भाई के साथ था, गाड़ी में हम जा रहे थे कहीं पे। ये मुझे पता था कि टीम अनाउंस पिछली बार, इस दफा तो मुझे नहीं पता था कि कब अनाउंस हो रही। पिछली बार जब पहली बार अनाउंस हो रही थी तो मुझे पता कि टीम अनाउंस हो रही है, लेकिन ये पता नहीं था कि नाम आ जाएगा या नहीं। लेकिन जब मैंने फिर अपना नाम देखा तो बहुत खुशी हुई। फिर मैंने पहले अपने भाई को बताया, उसे भी बहुत खुशी हुई। फिर हम घर आ गए, सबको बताया तो बहुत खुशी हो रही थी। ऑलराइट। एक अर्शद, आपने इमोशनल जो सीन डेब्यू था। किया अगेंस्ट जिम्बाब्वे, उसमें लोगों ने आपके एग्रेशन को भी देखा, तो बनना चाहते हैं तो शेब अख्तर बात करते हैं कि फास्ट बॉलर जो है ना वो सिर्फ बॉलिंग नहीं है, एग्रेशन है, एटीट्यूड है, एक ज़बरदस्त किस्म की अप्रोच होनी चाहिए। तो हमें वो अप्रोच दिखी आपकी बॉलिंग में, जो आपने एक ही मैच खेला फिलहाल। सो कंटिन्यू करना चाहेंगे पीएसएल में भी और इंशाल्लाह इंग्लैंड जब जा रहे हैं? इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी, बिल्कुल सही है। फास्ट बॉलर ही ऐसा ही होता है जिसमें एग्रेशन ही होती है। और यह है कि कूल माइंड वाले फास्ट बॉलर भी होते हैं, लेकिन यह है कि एग्रेशन होना जरूरी है, और इंशाल्लाह देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। तो प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है अरशद आप लोग की, और क्वारंटीन बड़ा मुश्किल था लेकिन वक्त गुजर गया। सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर PSL 6, और कराची चैंपियन बना, आप भी उस वक्त साथ थे, अब आप लोग टॉप पर हैं। लेकिन चूंकि टूर्नामेंट कुछ दिन के वक्त के बाद शुरू हो रहा है, कुछ आपने ग्राउंड और गर्मी का अंदाज़ा किया होगा। सो अब जब स्टार्ट होने जा रहा है तो क्या समझ रहे हैं, किस तरह के हालात होंगे, और क्या टॉप टीम को फ़ायदा होगा या शुरू से ही फिर मेहनत करनी है? नहीं बिल्कुल, देखे टॉप ऑफ द टेबल हम है, लेकिन यह है कि फिर से स्टार्ट है। तो फिर से स्टार्ट, मतलब शुरू से स्टार्ट किया है, क्योंकि वो बीच में ब्रेक आ गई थी। तो ये है कि फिर टीम तैयारी कर रही है, और जेल है टीम, और पूरी मेहनत कर रहे हैं सब। गर्मी है लेकिन अभी टूर्नामेंट है, तो अब ये है कि इसका सामना करना है, और इंशाल्लाह सब बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। वसीम अकरम जब किसी टीम में हों, अभी हर्षल गिब्स बात कर रहे थे कि उनके खिलाफ खेलते हुए बड़ा अरसा हो गया, लेकिन अब वो हंस भी रहे थे कि अब भी यही ख्वाहिश है कि सामना ना करना पड़े, बट उनके साथ सीखना और फिर बतौर मेंटोर वो आप लोग के साथ हैं। तो अरशद, बीइंग अ यंग फास्ट बॉलर जिसने भी कैरियर का आगाज़ किया है, आपको वसीम अकरम के साथ कराची किंग्स में जो काम करने का मौका मिल रहा है, कुछ इस एक्सपीरियंस के बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, देखे आप, मेरी पिछले 2 सालों से मैं वसीम भाई के साथ जो रहा हूँ, तो मेरी बॉलिंग में बहुत चेंज आ गई है। मतलब वसीम भाई से जो कुछ मैं सीख रहा हूँ, वो उससे बहुत फायदा हो रहा है। और ये है कि हर सेशन में, डे बाय डे हर सेशन में वो बताते रहते हैं कुछ ना कुछ, और उसके साथ काम करके बहुत मजा आ रहा है। वसीम भाई के सबको पता है, वो एक लेजेंड है, तो हर टाइम कुछ ना कुछ सीखते हैं उनसे। ठीक है। अब ऑब्वियसली अगर बाबर आजम आपकी टीम में ना होते तो मैं तो उन्हीं का पूछता, क्योंकि वो इस वक्त सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, शायद PSL में भी और पाकिस्तान में तो है ही हैं। बट स्टिल अरशद, बाबर को कभी बॉलिंग करने का मौका मिलता है नेट्स में तो कितना मज़ा आता है, और दूसरा जब लीग शुरू होगी तो बाकी टीमों के जो बैट्समैन है, किस बैट्समैन के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं जो ऑब्वियसली आपको पसंद भी हो, या बतौर बैट्समैन आप समझते हैं चैलेंजिंग होगा उन्हें बॉलिंग करना? जी बिल्कुल, बाबर भाई का मैं कहता हूँ कि बाबर भाई को हमें नेट में ही मौका मिलता है कि उसको बॉलिंग करे, लेकिन मैं अपनी बॉलिंग ज्यादातर उस टाइम इंजॉय करता हूँ जब मैं बाबर भाई को बॉलिंग करता हूँ। क्योंकि वो जिस तरह वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, तो उसको बॉलिंग करना बहुत मजा आता है।
और ये है कि जिस तरह वो शॉट्स खेलते, तो उस टाइम मतलब अपने आप को वो चैलेंजिंग भी लगता है कि मतलब थोड़ा सा भी बुरा बॉल दे दे आप तो वो पनिश करते, तो बहुत मजा आता है। और बाकी रही बात प्लेयर की, तो प्लेयर जो जो मेरा फेवरेट है, जिसको मैं बॉलिंग करना चाहता हूँ, वो तो खैर पीएसएल में नहीं है, केन विलियमसन। लेकिन ये है कि अभी सामने जो भी आए तो अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि अच्छा करूं। ठीक है। अब ऑब्वियसली आपका डेब्यू हुआ जिम्बाब्वे में, अब जो अपॉर्चुनिटी आ रही है इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़ की, तो मज़े की बात यह है कि 8 T20 मैचेस, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। पहले T20 मैचेस 1-2 होते थे, 3, फिर वहाँ 5। तो क्या समझते हैं अरशद, वर्ल्ड कप है इस साल और माशाल्लाह ऑलरेडी आप कराची किंग्स से पाकिस्तान टीम में आ गए, लेकिन आईसीसी का इवेंट खेलना और उसमें अच्छी परफॉर्मेंस देना हर किसी का ख्वाब होता है। सो कितनी मेहनत करेंगे और ऑब्वियसली कितनी ख्वाहिश भी है कि वर्ल्ड कप जो है वो खेलने का मौका मिल जाए? जी बिल्कुल। अभी तक जितनी भी क्रिकेट मैं खेला हूँ तो उसके पीछे एक मेहनत ही है, हार्ड वर्क है। हर किसी की यही ख्वाहिश होती है कि वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करे, और वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट करना एक एजाज की बात है हर एक प्लेयर के लिए। तो इंशाल्लाह मेहनत जारी है, और जितना भी मुझसे हो सके इंशाल्लाह मेहनत करूंगा और अपने मुल्क के लिए अच्छा करूंगा ठीक है, इंशाल्लाह। एक छोटा ब्रेक लेते हैं। पुराने ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अरशद की क्रिकेटिंग जर्नी का जो स्टार्ट था उसके बारे में भी बात करेंगे। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक में। पुराम रिप्ले में खुशामदेद। अरशद, आपसे बात हुई पाकिस्तान सुपर लीग वर्ल्ड कप वसीम भाई के हवाले से, लेकिन कुछ आपकी क्रिकेट जर्नी के बारे में तो जानना चाहूँगा, क्योंकि आप केपीके से बहुत टैलेंट आ रहा है और सवाबी या उसके अलावा जितने भी केपीके के इलाके हैं आपका ताल्लुक भी वहीं से है। तो कुछ बताइएगा अर्ली इंस्पिरेशन और जर्नी यहाँ तक कराची किंग्स पहुँचने तक। जी बिल्कुल। क्रिकेट मैंने स्टार्ट की थी 2015 से, मैं कुछ 3 महीने खेला था हार्ड बॉल क्रिकेट। तो उसके बाद मैं अंडर 16 खेला। उसके बाद जैसे पीसीबी के टूर्नामेंट्स होते हैं, अंडर 19 खेला। फिर उस साल, उससे अगले साल फिर अंडर 19 रीजन खेला, तो उसमें परफॉर्म किया। और फिर मैं वर्ल्ड कप के लिए मेरी सिलेक्शन हो गई अंडर 19। उसके बाद जब मैं वर्ल्ड कप खेला, उसके बाद मैंने एक और टूर भी किया था पाकिस्तान की तरफ से, एशिया कप अंडर 19, वो भी खेला। उसके बाद मैं कराची वाइड की तरफ से 2017 में आई थिंक नेशनल T20 खेला था। जी। उसमें भी टॉप थर्ड के टॉप फोर्थ में था, विकेट टेकर। उसके बाद मैंने वापडा टीम से फर्स्ट क्लास खेली। उसके बाद वो सिलसिला फर्स्ट क्लास का मतलब वो सी डोमेस्टिक वो चेंज हो गई इस बार। तो तो फिर कराची मैंने किंग्स तक केपीके से आखिर में आपको डोमेस्टिक कौन लेकर आया अरशद, किसकी वजह से आप आ सके? अपनी परफॉर्मेंस की वजह से। हाँ, वेरी परफॉर्मेंस हर नाइस। जगह पे परफॉर्मेंस दी थी। जी जी। तो कराची किंग में फिर सिलेक्शन हो गई। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है अब तक। अच्छा अरशद, बहुत सारा टैलेंट, जिसमें स्पेशली फास्ट बॉलिंग की बात करें, आप, नसीम शाह, जुनेद खान, यासिर शाह, इसी तरह मूसा, फिर आप भी। तो उस्मान शनवारी ने एक दफ़ा जिक्र किया, तो उन्होंने तो अपनी ताकत या जो फास्ट बॉलिंग का राज है वो एक तरह से एक लोबियो को करार दिया था कि वो बड़े शौक से खाते हैं। तो क्या खास चीज़ है भाई केपीके के अंदर अरशद के, माशाल्लाह सारे फास्ट बॉलर वहीं से आ रहे हैं? किसको क्रेडिट देंगे? लड़कों की मेहनत तो ऑब्वियसली होती है, बट कोई तो होंगे वहाँ कोचिंग जो इन हीरो को तराश रहे हैं, या आप समझते हैं कि जो एक बिल्डअप है, सख्त जान होना, अच्छी खुराक, ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं? आपके ख्याल में इसकी क्या बेसिक रीज़न है इसका? मेरे लिहाज से मैं तो मतलब मैं अब मेरा अपना जो है, तो मैं तो मतलब ऐसे कुछ खास नहीं गाता। मैं तो सब कुछ गाता हूँ, मतलब जो भी मिल जाए मैं गा लेता हूँ। ये है कि ज्यादा वो फैटी जो होते हैं वो नहीं गाता, फैटी चीजें। लेकिन ये है कि केपीके से टैलेंट उधर इसी की वजह से है कि सारे फास्ट बॉलर तगड़े उधर के, शायद यही वजह हो सकती है। तगड़े लोग हैं, सिंपल लोग हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई खास वजह है। लेकिन ये है कि लड़के मेहनत करते हैं सारे, और दिल से करते हैं, तो यही वजह हो सकती है। मुझे लगता है अरशद के थोड़ा सा इसमें कुछ बारबेक्यू और कबाब शबाब का रोल भी हो सकता है, क्या पता। हाँ ये है कि सारे पठान है, तो पठान ये ज्यादातर यही मटन वगैरह सब कुछ खाते हैं, तो शायद यही वजह भी हो सकती है। ठीक है, आखिर में अरशद, अच्छा आपने केन विलियमसन का तो आप नाम ले लिया था, बट बीइंग अ राइजिंग T20 फास्ट बॉलर, और इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि आप पाकिस्तान के लिए वनडे और टेस्ट तक भी जाएं, बट किन बॉलर्स को के खिलाफ खेलने की और या उनको आउट करने की ख्वाहिश है? केन विलियमसन के अलावा भी बहुत सारे बैट्समैन हैं जिनके खिलाफ आप खेलना चाहेंगे।
जी बिल्कुल, देखिए दुनिया में बहुत से वर्ल्ड क्लास बैट्समैन हैं, जैसे विराट कोहली हो गए, स्मिथ हो गया, जॉय रूट है, इंग्लैंड के बहुत से बैट्समैन हैं, तो इन सबको आउट करना मेरे लिए है कि मैं उनको बॉलिंग करूं, उनको आउट करूं। और आपको मौका मिल रहा है अगेंस्ट इंग्लैंड, तो बहुत तेज क्रिकेट खेलते हैं, तो आई थिंक दिस गोइंग टू बी अ रियल जी टेस्ट फॉर पाकिस्तान और ऑब्वियसली जो भी लड़के खेल रहे हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें अर्शद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपको और आपकी टीम थैंक को यू। गुड लक कहते हैं। सुपर लीग अब चंद दिनों की जो है वो दूरी पर है, और जितने भी राइजिंग टैलेंट इनके साथ आपके इंटरव्यूज़ जो है वो हम आपको दिखाते रहेंगे। आप सब भी ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए, आज रिप्ले के हैशटैग के जरिए आप ट्विटर पर या फेसबुक पर जाके अपने सवाल भेज सकते हैं। पुराना रिप्ले आज देखने का शुक्रिया, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।